अथ वैकृतिकं रहस्यं ऋषिरुवाच। ओम त्रिगुणा तामसी देवी सात्वकी या त्रिधोदिता सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योग निद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैटभनासार्थ यां तुष्टा वाम्बुजासना दस वक्त्रा दस भुजा दस पादांजन प्रभा विशालया राजमानाति संलोचन मालया स्फुरद्दसन्न दंष्टा सा भीम रूपापि भूमिप रूप सौभाग्य कांतीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्ग बाण गदा शूल चक्र शंख भुसुंडी भृत परिघं कारमुकं शीर्षं निश्चयो तद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूतामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिष्मर्दनी श्वेतानना नीलभुजा श्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूप सौभाग्यशालिनी अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्षन्ते दक्षिणादकरक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृत भुजा मेभिरायुधे कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत शङ्खं घण्टामुलाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातु पृथगाशं निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणे अष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादश भुजा च सा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा काल मृत्यु च संपूज्यौ सर्वारिष्ट प्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायं स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयः अष्टादश भुजा च सा पूज्या महिषमर्दनी महालक्ष्मीर्महाकाली शैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता सा जगत्प्रभुः पूजयेत् जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् आर्ध्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेदैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्जा मयेरिता तेषं किल सुरा मांसैर्नोक्ता पूजा नृपकुचित प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितै वामभागे ग्रतो देव्या छिन्नशिरसा महासुरम् पूजयन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येन चराचरम्
कुर्याच्चेस्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमये एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्धं तु न जपेज्जप छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्धनि कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषः जुहुयाति स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्याहं परमेश्वरीं भोक्त्या भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् जो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्देहत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्यस्यसि इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्।